Yeah, good evening. क्या हाल है? Fine ना? तो homework कर दिया कि नहीं? 2000 कौन सा year थे? Which homework I had given you? Huh? All the equations. Balance हो गया? All of you could balance the reaction. Types of reactions you have done? No. So today we are going for the types of reactions. Again, so let us see the types of reactions today. Chemical reactions and equations. Yes or no? ध्यान से सुनिए. Okay. What is important over here is that you have to just go on doing your studies continuously. Okay. So that क्या होगा? आज नहीं तो कल क्लिक होगा. Now, what are the chemical reactions and equations? Now, there are different types of chemical reactions. Now, what are the different types of chemical reactions? Types of reactions. We can. तुमने किया होमवर्क किया कि नहीं किया? नहीं किया. क्यों नहीं किया? हाँ? क्या हो गया? तुम भूल गए एकदम. Then और आप भूल गए कि याद रखा. और आप भी भूल गए. क्या याद रखा? खाना वाना याद रखा आपने कि मुझे लंच करना है, डिनर करना है, हाँ, सोना है, लेकिन होमवर्क नहीं करना है. आपने किया? नो. अरे just now you said yes. Means what is the problem over there? नहीं आ रहा तुम लोगों को बैलेंसिंग. कि तुमने ट्राई नहीं करोगे तो नहीं होगा ना, राइट? ट्राई करो. आई एम गिविंग वन मोर डे और वन मोर वीक इन फैक्ट. ठीक है? 3 बार प्रैक्टिस करो एंड देन यू विल एक्चुअली व्हाट बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड. ठीक है ना? डोंट मिस आउट. उधर लिख के रखो, आई हैव टू डू माय पेंडिंग होमवर्क ऑफ बैलेंसिंग. ठीक है? एनी रिएक्शन व्हिच यू फाउंड इट डिफिकल्ट सब आ गया. गुड. So let us see the types of reactions. Because क्या होगा? Pending work will increase, isn't it? काम क्या हो जाएगा? Pile up हो जाएगा. और pile up से क्या हो जाएगा? इसका repercussions क्या है? देखो क्या होता है? This child is actually what? Not doing the homework. ठीक है? Not doing the homework means what? ये जो टीचर है, एक मिनट. Okay, now इधर देखो. Not doing the homework. Teacher is carrying out the. Teacher is doing what? Homework इधर. अरे teaching the topic. Topic number 1 का homework नहीं किया तो क्या हो जाएगा? Teacher तो दूसरा topic शुरू कर देंगे. This previous topic जो नहीं किए उस पे क्या होगा? Stress आएगा. Yes or no? स्टूडेंट के ऊपर. क्यों? फर्स्ट टॉपिक का होमवर्क तुमने नहीं किया, सेकंड टॉपिक में आपको स्ट्रेस आना शुरू हो, क्योंकि ये टॉपिक कनेक्टिंग है पहले वाले टॉपिक से, राइट? तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे एक बर्डन आना शुरू हो जाएगा और फिर यू विल फाइंड व्हाट थिंग्स बिकमिंग व्हाट स्ट्रेसफुल. फिर उसके बाद क्या होगा? फीवर, फिर वीक, फिर एब्सेंट, एब्सेंटी या एब्सेंसी. फिर क्या हो जाएगा? Then you will start skipping the test. UT में, फिर अपना स्कूल में सब स्किपिंग चलता रहेगा.
और यहाँ टीचर खड़ा था टॉपिक कंप्लीट, राइट ना? तो देखो ये क्या हो गया, आप नीचे जा रहे हैं और टीचर टॉपिक में ऊपर ऊपर चले जाए, इसका रिपरकशन बहुत खराब होगा। सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद क्या होगा, जो कनेक्टिंग पीपल है, पेरेंट्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, सिबलिंग्स, सबके ऊपर इफेक्ट आएगा, वो भी स्ट्रेसफुल हो जाएगा। एक किसकी वजह से, होमवर्क। इसको एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये प्रॉब्लम जब सॉल्व होगा ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, एंड यू विल हैव व्हाट, हैप्पी फेस, राइट ना? स्माइल आ जाएगा तुम्हारे फेस, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है? और टीचर भी स्माइल करने लगेंगे। चालू करो अभी आज से, ठीक है? नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, there are different types of chemical reactions over here. The first type of chemical reaction is what? Combination. What is combination? Combination is basically, for example, where two elements or two substances combine to form what? A single molecule of product. This is, for example, H2 plus chlorine will give you what? HCl. Right now? Okay, either balancing. Likewise, nitrogen plus hydrogen giving you what? Ammonia. Yeah, hydrogen plus oxygen giving you what? Water. Okay, combination. Just opposite of is decomposition. What is decomposition? Where a substance is broken down into what? A single substance is broken down into what? Simpler substances. Or a compound is broken down into elements. For example, here but this decomposition are of three types. One is called as thermal decomposition. What is thermal decomposition? जहां पे तुम heat supply करोगे, calcium carbonate strongly heated, and you will get what? Calcium oxide and what? Carbon dioxide. Mercury oxide थोड़ा सा हीट करोगे, mercury oxide में convert हो जाएगा. One substance changing into two or more simple substances. This thermal heat say. Then there is one more that is called photochemical decomposition. What is photochemical? Like silver chloride, जब आप sunlight को expose करोगे, क्या हो जाएगा? आपको सिल्वर और क्लोरीन मिलेगा, right? Then silver chloride या silver bromide ले लो, in the presence of sunlight splits up in the form of what? Ag and Br. ठीक है ना? Metallic silver आपको दिखेगा, black color का silver. Why it becomes black? Because it actually what reacts with sulfur and becomes black. अपना जो silver ornament black हो जाता है ना, क्योंकि वो सल्फाइड से रिएक्ट करता है. हवा में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका सल्फर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनता है. अगर उसको प्लास्टिक में कवर करके रखेंगे तो कोई सिल्वर कभी ब्लैक नहीं. Like sometimes you bring silver coins, so प्लास्टिक में पूरा एंट्रैप रहता है, वो ये नहीं. जरा भी उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड चला गया, which is a gas, will convert into silver sulfide, which is black in color. This is called photochemical. What is photochemical? Because of the presence of sunlight. Then there is electrolytic decomposition. Electrolytic means we have passed electricity. This is a hydrogen and oxygen, and sorry, water. Okay, splits up in the form of what? Electric current. Electrolysis. Okay, in the presence of small amount of acid. जैसे आप कुछ लेमन ड्रॉप्स कैसे थोड़ा डाल देते हो पोहा में, वैसे यहाँ पे वाटर में थोड़ा सा आपको लेमन ड्रॉप्स सॉरी ये एसिड डालना पड़ेगा, और फिर आपको मालूम पड़ेगा वाटर becomes a good conductor of electricity, and immediately you'll find hydrogen as going at the cathode, which is a negatively charged electrode, and oxygen is going at the anode.
This is with the help of electricity. We can split up water into two different elements, basic elements. So this is called as decomposition. तोड़ दे उस compound. ये एक compound को दो simple compound produce कर. With the help of either heat or with the help of electricity, heat, sunlight, the light, then electrolytic process. That is by electricity. Because बिना electricity के water कभी split नहीं होगा hydrogen and oxygen. ठीक है? Balance. This decomposition. Third वाला क्या है? If you see the third reaction, which is called as displacement reaction. Metal displacement. What is metal displacement? Metal displacement में क्या होता है? For example, here a more reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution. Metal salt, यानी ये जो metal है, okay, ये metal actually what इसको displace कर देगा from its salt solution. ये metal salt बन जाएगा और जो less reactive metal है वो बाहर आ जाएगा. Get deposited. Less reactive metal. इधर चाहिए तो लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या है? You take zinc and dip in copper sulfate solution. What is the color of copper sulfate? Blue. Suppose आपने क्या किया? एक vessel लिया और उसमें actually copper sulfate डाल दिया, which is having blue color. ठीक है ना? Then you add zinc rod. ठीक है? Zinc rod उसमें डाल दो. जैसे zinc rod डालोगे ना, तो क्या हो जाता है? ये जो zinc है, which is zinc, which is there, zinc rod, okay, start dissolving in the form of what? Zinc ions. और जो copper ion जो solution में है, start depositing over here. ये copper ion, इस copper sulfate है ना? Copper sulfate जो है, copper ion जो है solution में, they split up in the form of copper ions and sulfate ions. और ये zinc ions उसको replace, और copper क्या करते हैं? धीरे-धीरे वहां पे जाके deposit होना शुरू कर देते हैं. ये जो जहां पे zinc निकला है, okay, उसकी जगह पे copper चले जाते हैं. Sometimes you get copper over here at the bottom also. Okay, but bottom में नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो जाके उधर deposit हो जाएगा. ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है? Zinc displaces copper from copper sulfate solution, and you find that blue color slowly fades and reddish brown deposit of this copper is formed. And you will get what? Zinc sulfate and copper is deposited. Less reactive, more reactive metal dissolve हो जाता है और less reactive metal deposit हो जाता है. Okay, this is called displacement reaction. It's like saying this way. Here you are sitting alone, and here your friend is chatting with another partner over here. You are more reactive. Okay, और ये देख रहे हैं कि ये दोनों आराम से चैटिंग कर रहे हैं, तो तुमको गुस्सा आ जा रहा है. मैं इनको डिस्प्लेस, बोले तू इधर आके बैठ, ये इधर आ जाता है और तुम इधर आ जाते. डिस्प्लेसमेंट, राइट? ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो जाके अकेला बैठना पड़ा. कभी-कभी ऐसा होता है when two people are there and your best friend is actually talking to another person, you feel upset. Upset in the sense you feel not good. तो तुम क्या बता रहे? Normally we actually what are the bench partners here, but आज मैं इधर बैठ गया तो ये दोनों इधर आ गए. So now I have to remove it. Why? I am more reactive than this. Means I am more participative. ठीक है? Zinc sulfate and copper. This is called displacement reaction. You displace your friend from that particular place, and तुम जाके उधर बैठ गए और वो अकेला बैठना पड़ता है. Okay, और blue color fade हो जाता है. यहाँ पे blue color will vanish, which will become what? Colorless. ठीक है? Next is double displacement reaction. What is double? यानी दो जगह पे displacement होगा. Right? What is double displacement? Like for example, double displacement means what? Suppose you and your, let us say A and B, one salt is there. That means you require both the salt solutions. यहाँ पे एक metal होना चाहिए, एक salt solution होना चाहिए. And here AB and this is CD. Yes. Now there is an exchange of metal ions. ये metal इसको replace करेगा, ये metal ion इसको replace करेगा. Double mutual
for example, displacement resulting into what? Two new salts, which is nothing but what? CB and AD. Yes or no? इस बार क्या हुआ? तुम और तुम्हारे पार्टनर बैठे हैं इधर, तुम्हारा और एक जिगरी दोस्त इधर बैठा है विद अनदर पार्टनर. इस बार दोनों बेंच में दो स्टूडेंट बैठे हैं, बट ये तुम्हारा फ्रेंड ये ज्यादा तुम्हारे से क्लोज है, राइट? ये वाला तो ये क्या करता है, और ये इसका क्लोज, तो इमीडिएटली ये इसका एक्सचेंज, मतलब टू इधर विल एक्सचेंज आवर प्लेस, म्यूचुअल एक्सचेंज. इस बार ऐसा नहीं कि वो अकेला बैठेगा, तो इधर आके बैठ, आई वांट टू कॉपी वन सम, he says I don't want to copy anything, तो इधर आ. जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है? और तुमको नया सेट ऑफ स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, बेंच पार्टनर एक्स, जैसे हम लोग स्कूल में जैसे करते हैं ना, वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट, सर केमिकल रिएक्शन. Then why you are changing your place? Teacher immediately tells you, sir, for a change. Change means chemical reaction. Okay? Sometimes teachers when they see, अरे आज तुम लोग अलग-अलग बैठे हो, right? तो अलग-अलग बैठे, then कोई वो स्टूडेंट बोलता है, सर टीचर मैडम this for a change. Change means chemical reaction. So in other words, if you talk about this particular chemical reaction, okay? ये remove कर देता हूँ. Suppose you are having, for example, barium. वो ब्लू पेन नहीं चल रहा है, नथिंग टू वरी, ब्लैक पेन चलेगा. इधर देखो, बेरियम क्लोराइड लिया आपने और सिल्वर नाइट्रेट लिया आपने. दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, दिस इज एक्सचेंज ऑफ, राइट? क्या मिलेगा आपको? बेरियम नाइट्रेट, बेरियम सिल्वर नाइट्रेट है ना, बेरियम नाइट्रेट मिलेगा, व्हिच इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, and you get a precipitate of silver chloride. यानी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? Okay, you will get a insoluble solid or precipitate. Now what is precipitate? An insoluble solid. Silver chloride. So you means one of the salt will be actually insoluble in water. So it's called also called precipitation reaction. इसको दूसरा नाम दिया प्रेसिपिटेशन, ठीक है? डबल डिस्प्लेसमेंट. Then there's one reaction, यहाँ पे लिख देता हूँ, which is called as redox reaction. Last reaction is, what is redox reaction? Redox reaction means what? The word itself indicates reduction and oxidation. What is oxidation? Oxidation means, इसको इधर ले लेते हैं. Oxidation means addition of oxygen or removal of hydrogen, ठीक है ना? ओके, रिडक्शन मींस, रेड का मतलब है रिडक्शन. रिडक्शन का ऑपोजिट क्या है? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का ऑपोजिट क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सिंपल. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, तो आप क्या कर रहे हैं? नॉन मेटल ऐड कर रहे हैं, इधर नॉन मेटल रिमूव कर रहे हैं. ये सब यहाँ पे हाइड्रोजन इज अ मेटल, I mean although it is a gas but it shows metallic character, इसलिए removal of what? Metal. Here addition of metal. तो अगर metal add होता है कोई भी substance में, reduction. Metal अगर lose होता है तो it is nothing but oxidation. Let's take an example over here. यहाँ पे देखो, if I am taking copper oxide, hydrogen, तो देखो ध्यान से देखना है, ये कॉपर ऑक्साइड का स्टेट क्या हो रहा है? कॉपर और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है. अब तुम इसको देखना, इसको, इस कॉपर ऑक्साइड का स्टेट क्या हो? इसको लगा देते हैं. कॉपर ऑक्साइड का स्टेट क्या हो गया? इट हैज लॉस्ट ऑक्सीजन, यस और नो? ऑक्सीजन कम हुआ ना, तो कॉपर ऑक्साइड हैज बीन व्हाट? जिसमें ऑक्सीजन कम हो रहा है, इट हैज बीन रिड्यूस्ड. और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, वो खुश हो गया कि सर ऑक्सीजन ऐड हो गया. एक का मार्क्स कम हुआ, दूसरे का मार्क्स ज्यादा हुआ. टीचर ने एक की जगह एक, वो फॉर एग्जांपल इसमें मार्क्स कम कर दिया और दूसरे में मार्क्स ज्यादा किया, तो ये क्या होगा? इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड. हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड. एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको याद रखना है. जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइज हुआ. जिसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है,
लॉस हो जाता है उसको रिडक्शन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. और एक एग्जांपल देते हैं, बट बिफोर दैट जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ यानी कॉपर ऑक्साइड रिड्यूसेस टू कॉपर, ऐसा बोल सकते हैं. ओके, इट रिड्यूसेस टू, that means now the substance which undergoes, which actually loses oxygen, okay, is nothing but called as what? For example, it's called as an oxidizing agent. ये देखो, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. जो हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन लेता है, becomes what? H2O. हाइड्रोजन is a reducing agent. इसके नीचे ही लिख दो इधर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये reducing agent. बराबर. Okay. Now what is important over here to understand? So copper oxide is an oxidizing agent, a reducing agent. Why? Because it undergoes oxidation, this undergoes reduction. So ये जो substance oxidation show करता है, reducing agent, and जो substance reduce हो जाता है, उसको oxidizing agent बोलते हैं, OA. Let us take one more example. Suppose for example MnO2 plus HCl giving MnCl2 plus water plus chlorine. ये देखो 4HCl और 2H2. अब देखो MnO2 क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन हट गया ना. ऑक्सीजन हट गया मींस इसका मतलब क्या है, इसने अपना ऑक्सीजन लूज किया है, राइट ना. तो MnO2 क्या हो जाएगा, इट हैज अंडरगॉन व्हाट, लॉस ऑफ, दैट मींस इट हैज अंडरगॉन रिडक्शन. वहां पे H को, यहाँ पे HCl has become what, H2O को कभी मत लेना, H2O को लेने का नहीं है, वो तो one of the, because most of the reactions are taking place in water only, water को कभी नहीं लेने का. ठीक है. HCl क्या स्टेट हो रहा है, अरे सर हाइड्रोजन मिसिंग है. हाइड्रोजन मिसिंग का मतलब क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यस और नो. It is nothing but what, oxidation. So hydrogen HCl is getting oxidized to chlorine because of loss of hydrogen. और MnO2 में ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है, इससे हाइड्रोजन क्या है, इससे ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, वाटर. ये दोनों जिगरी दोस्त हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है कि नहीं. ओके, जैसे वो पिक्चर थे ना बागबान, बागबान आपने देखा, उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल द चिल्ड्रन दे सेपरेटेड द मदर एंड फादर, लाइक वन सेट ऑफ चिल्ड्रन दे सेड आई विल कीप मदर. Okay, and the other set of children they said will keep father for 6 months. Why? Because खर्चा बहुत हो जाएगा, हम लोग नहीं समझ पाएंगे. Okay, 6 months इन लोग यहाँ पे मदर रहेंगे, ये फैमिली में फादर, but then they were not treating their parents very well. तो इन लोग तंग आ गए थे, बोले नहीं, I think so, and that too separation, they were separated. What is it, in an undesirable manner. So one fine day they just phoned up or sent message, we'll do one thing, we'll run away from those houses and finally what, we meet at this place, and they ran away from those places because that was a suffocation kind of. तो वैसे हाइड्रोजन यहाँ से अपना हाउस से निकला, ऑक्सीजन यहाँ से, दोनों मिल गए, and they lived happily. उसके बाद parents वो separation के, okay, that is the idea of this. So water का combination, water को कोई separate नहीं कर सकता. That's very important because hydrogen it likes oxygen very strongly. It's like a bonding बहुत strong. Then mother and father, बहुत strong bonding. ठीक है, उन लोगों को अलग करना means it's like a sin. Okay. Now what is important over here to understand is that this is something which is reduction, this is oxidation. MnO2 जो है यहाँ पे undergoes reduction, so it is an oxidizing agent. और जो oxidation होता है उसको reducing agent बोलते हैं. Agent means the substance. Sir, I have got one agent for selling my house. Agent is the man or the person. Okay? तो यहाँ पे जो substance है वो reducing agent. ये process को क्या बोलते हैं? Oxidation. ठीक है? जैसा कि I want to sell my house. So what is the process? I have to sign an agreement, process. But the person who's going to sign is an agent. Agent means
Sir, I am going to sign, I am the owner. And in between that agent who is going to do all these processes, clear? That process is called oxidation and reduction. And the person who is doing that, like MnO2 is HCl, MnO2 is an oxidizing agent, HCl is a so जो buyer है वो एक oxidizing जो for example oxidizing agent है जो supplier है जो बेच रहे हैं और जो ले रहे हैं उसको reducing agent ऐसा सोचिए या तो कोई भी उल्टा ये कर सकते but buyers and sellers one is oxidizing agent दूसरा reactant हमेशा reducing agent ये याद है ठीक है देखिए these are the 5 reactions ठीक है the types of reactions we can say
ये हो गया ना, डी पार्ट हो गया ये वाला। ज्यादा रिएक्शन हमको क्या क्या let's come to example the
two last reactions in your this particular chapter. Okay, सबका ये हो गया कि नहीं? So let us come to very complete कर लो. And there are two last everyday situation kind of things. One is called corrosion. Second is rancidity. The two process is based on redox reaction. Okay, would you like to know something? Okay. Yeah. Now, what is important over here is that this corrosion and let us say, for example, rancidity are the redox reaction. There is oxidation in everyday life. Again, that's a little. One is corrosion. This corrosion, a slow decomposition of metals, okay, in the atmospheric condition. What is this atmospheric condition? Atmospheric condition means in the presence of air and moisture. ठीक है ना, ये दोनों चीज इसमें क्या होता है? You take an iron, let's say nail या iron strip ले लो, you will find these iron atoms which are there, okay, which are definitely, for example, not reacting. But if there is a drop of moisture on that water, ठीक है ना, तो ये drop of moisture हम लोग को दिखेगा नहीं. जैसे ये surface पे पानी है, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं पड़ेगा, but moisture is there. टेबल में moisture, अपने बॉडी में moisture आ रहा है, ये बोर्ड पे आ रहा है. सो अगर ये आयन से बना है तो क्या होता है? ये जो आयन है वो ये वाटर में जाके रिएक्ट करता है. मींस actually what, for example, Fe, or let me tell you one thing more, oxidation is also called loss of electrons. Right? We say Fe loses 2 electrons and become what? Fe plus 2 ion. उसको oxidation बोलते हैं. Like sodium loses 1 electron and become what? Sodium ion. यानी जो positive ion बना देते हैं उसको oxidation बोलते हैं. Why? Because these elements have what? 1, 2 and 3 valence electron which they easily lose. Reduction means what? On the other hand, reduction क्या करते हैं? Gain of electrons. जैसे Cl is gaining electron, becoming what? Cl minus. Why? Because Cl has got 7 electrons. जिस जो element के पास 5, 6, 7 electrons valence shell में है, उन लोग gain करेंगे. Because it's easier to gain 3, 2 and 1 rather than what is say, for example, gain 7, 6 and 5. Yes or no? Okay. Last time I gave you an example of the two children, ना? मालूम है ना आपको? बताया था? नहीं. यहाँ पे क्या होता है? For example, let us say बहुत पुराने जमाने की बात है. There's a tree. There was a tree over here, and there's a school. यहाँ पे school थी. ठीक है ना? बहुत like 40-50 years back story. तो ये दो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स पढ़ते थे along with other students of course. One fine day after the recess, they got the notification or message from the office that your fees are pending. ये बच्चे लोग बाहर आके after the recess 11-12 बजे कुछ, then they started saying, I mean like fees is pending, so today you have to pay. And this is a village school. Village यानी यहाँ से इनका घर कहाँ से, यहाँ से स्कूल से 5 किलोमीटर अवे. And you know village में क्या हो रहा है? रोड का कोई पता नहीं. 40-50 साल पहले की बात. तो and fees was 8 rupees that time. So this come out of the school at 1 o'clock and sit over here.
started thinking, pondering क्या करना है, इसके पास 1 रुपया है, इसके पास 7 रुपये, अगर सपोज आज नहीं भरा 2 बजे तक, तो दोनों क्लास के बाहर, एट दैट टाइम देयर वाज नो इंटरनेट, तो टीचर का लेक्चर वाज लाइक इंटरनेट ओनली, कोई नोट्स देता नहीं था, स्टूडेंट्स भी अच्छे अच्छे, लाइक फॉर एग्जांपल एंड बोथ वर इंटेलिजेंट, तो इसने क्या बोला था कि मेरे पास 1 रुपया है, मुझे तो 7 रुपये मिलने से रहा, क्योंकि 7 स्टूडेंट्स तो नहीं मिलेंगे इधर, 7 स्टूडेंट को पहले एक्यूमुलेट करो और पूछो उन लोग से, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल बट डिफिकल्ट, अभी टाइम भी नहीं है अपने पास, तेरे पास 7 रुपया, तो एक काम कर, मेरा 1 रुपया ले ले, तो 1 रुपया जब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 8 रुपया हो गया कि नहीं, मुझे तो 7 रुपये मिलने से रहा, बेटर टू लूज, और तू जाके फीस भर दे, यू गो एंड पे योर फीस, you will be at least in the school next day, I'll be outside the school, no problem, okay, but for just a day or two वो problem solve हो जाएगा, 1-2 दिन में, but at least वो teacher का lecture attend करके you will teach me when you come out of the school, because the teacher का lecture तुम ही समझा सकते हो, इससे क्या हुआ, इसको stability मिला by giving and other got stability by taking, although he was hesitant to take, but he said नहीं, चलो दोनों में एक at least अंदर बैठेगा और वो सीखेगा, and he will try to teach me also. That is the second step, but giving is something which is very very difficult. We gave, that means it undergoes what, oxidation, other got gained, therefore it is actually what, undergoing reduction. This losing and gaining is actually what are the part of our life basically. That means there are two kinds of people in this world, buyers and sellers. तो जो sellers है वो lose करेंगे अपना, जैसा मैं I am selling my house, so I am losing my house. In the process I am getting something, okay, money I am getting maybe stability, but other is getting the house, okay, but he has to lose something, right? Now he is losing his friend on that particular day in the school, कि अरे वो बाहर बैठा है बेचारा और उसने पैसा दिया मुझे, and remember in village, like these students who were in 8th standard or 7th standard, they didn't have a lot of pocket money. चलो 200 रुपए दिए तो उस टाइम तो 8 ही रुपए से उतना भी अमाउंट नहीं होता, इसके पास लकीली था 7 रुपए, ठीक है. So anyway, what I'm trying to tell you is that some are losers, some are gainers, and therefore that is the idea of, for example, that is the way life runs, ठीक है. लाइफ का रनिंग कैसे होता है, कोई कुछ लोग बाय करते हैं, कुछ लोग सेल करते हैं, ठीक है कि नहीं. जैसे तुम अभी मॉल में जाते हो, वहां पे तुम लोग सेलर्स रहते हैं और तुम बाय करते हो, तो ऐसे हो जाता है, you have become a customer and they are actually what, sellers. So likewise anyway, what I'm trying to tell you is that some lose electrons, some gain. लोग lose करेंगे, they will undergo oxidation, and जो gain करेंगे they undergo reduction. So chlorine is an oxidizing agent and sodium and iron are reducing. So metals are always reducing agent and non-metals are always oxidizing agent. Okay. Anyway, जो iron, अगर ये drop of water दिख रहा नहीं है, but ये water में जाके क्या होता है, ये जो Fe है ना, अपना electrons lose कर देता है. यानी क्या होता है, they lose 2 electrons and become what, Fe+2. अब ये जो Fe+2 है, ये अंदर चला जाता है पानी में, ठीक है, यानी डिसॉल्व हो जाता है उसमें, और इसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे इससे थोड़ा सा गैप आ जाता है, ठीक है. और ये जो Fe+2 लूज हुआ, रिमेंबर इसमें हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन है, वाटर है, ठीक है. तो ये Fe+2 ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनता है, Fe2O3, यानी ये बन जाता है Fe2O3. और इधर क्या होता है, Fe2O3 बनने के बाद this particular layer becomes very much brittle, and finally what happens, some reddish brown mass is developed over here, okay, reddish brown mass. थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा, थोड़ी देर के बाद 4-5 दिन के बाद आप देखेंगे रस्ट डेवलप हुआ. तो जैसे तुमने एक्चुअली यहाँ पे सर reddish brown mass, what is that, rust, Fe2O2, half mole of oxygen से react करते हैं और therefore it forms what, rust. And this rusting process is nothing but addition of oxygen हुआ कि नहीं, undergoes oxidation, okay. और ये जो हाइड्रोजन है loses electrons and become what, H+, यानी this undergoes what, reduction. पानी का जो water है, water का जो actually what, H2O splits up in the form of what,
H plus and OH minus. ये अपना हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, just इसको पूरा रिएक्शन को याद रखना है. This process is called corrosion. Likewise, for example, corrosion is also also called rusting process. So here slow decomposition, that means आपका जो ग्रिल है ना, कॉर्नर में कभी भी रस्ट हो गया है, यानी पेंट निकल गया तो आपको पानी अंदर जाएगा, और जैसे ये लेयर फर्स्ट रस्ट फॉर्म हो गया है, पानी, this upper layer becomes brittle and the water enters in the second layer, third layer, fourth layer, पूरा वो लेयर को खा जाएगा. थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे कि जैसे आपने टच किया, ऐसे बैंक किया, आपके हाथ को चूरा आ जाएगा, रस्टिंग. ठीक है कि नहीं? तो आपका जो जैसे से कीज है, कभी कोई देखा होगा आपने कीज या जो भी अपना, फॉर एग्जांपल इफ यू कीप that particular metal piece in the moisture is not rusted, right now, okay, which is made up of iron basically. Likewise, for example, there is one more concept called rancidity. So likewise, the railways which are made up of fully of iron, आपने देखा होगा रेलवे लाइन के वहां पे जंग पूरा रखा रहता है, रेडिश ब्राउन, what is that? Therefore rusted. ठीक है, like silver articles they become black. Why? Again, it's a process of corrosion. In spoilage of any metal, converting it to the oxides by addition of oxygen or any non-metal is called as what? Corrosion. ठीक है, building gets corroded, plastic gets corroded. आपका plastic bag लिया, उसमें brand name धीरे-धीरे fade होते जाएगा. Corrosion. ठीक है कि नहीं? Corrosion is anything spoilage basically, या oxidation. Rancidity is what? Like suppose mommy gives you, for example, one let us say some food, okay, which is made up of what? Some fats or oils. और यहाँ पे थोड़ा सा पैकेट, यानी आपका जो टिफिन है थोड़ा एयर टाइट नहीं था, तो you actually what? In summer, what actually happened? You just kept this particular thing slightly open, so air went inside, and that particular fat or oil which was there in the vegetable, okay, reacted and converted into what? It's oxide. Yes or no? Oxide means oxidation hua, and immediately you get the smell. That means that particular food has got rancid. The oil stickiness आ गया उसमें. 11 बजे आपने इतना गर्मी में, सपोज मम्मी ने 6 बजे पैक किया सवेरे, और तुम 11 बजे खा रहे हो, पहले देख के खाना है कि अगर सपोज उसमें ऑयल या वो ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन उसमें रिएक्ट कर लिया, ये ऑयल और फैट किसमें? वेजिटेबल या जो भी चीज आपने ऐड किया है, अगर सपोज वो गर्मी में एकदम, बिकॉज टेम्परेचर व्हेन इट्स हाई, दिस प्रोसेस ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड rancidity. Likewise, that's why we actually have to keep the food in the airtight container. Okay, likewise, for example, if you take kurkure packet, right now, you want to keep that kurkure packet actually crispy, I mean the wafers and all those things, uncle chips. So what did they do? They flushed nitrogen. These are antioxidants. आप देखोगे तो पेपर चिप जो चिप्स है उसका थोड़ा सा पैकेट हवा, यानी जैसे as if some air is filled up. That is not oxygen, that is nitrogen. नाइट्रोजन क्या होता है? वो उसको क्रिस्पी रखता है, फ्रेश रखता है. बट जैसे तुमने टेयर आउट किया और आधा वेफर्स खत्म किया, बट उसको पैकेट ओपन ही रखा है, आफ्टर नॉट कंज्यूमिंग फुल्ली, देन थोड़ी देर बाद सॉगी हो जाता है ना, और फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है. दैट इज नथिंग बट दिस. सो दिस इज कॉल्ड rancid. Likewise, you keep the butter outside the refrigerator, वो rancid हो जाता है, it converts into butyric acid. वैसे मिल्क अगर आपने बाहर रख दिया तो कर्ड में, यानी फॉर एग्जांपल स्पॉइल हो जाता है, so that lactose become lactic acid, खट्टा हो जाता है. ठीक है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है. all rancid, all oxidation process. Okay, so this is the idea of rancidity and corrosion. Everyday का process, redox reaction. ठीक है, देखो
Okay, done. Read the content. अब हम लोग जाते हैं अपना एक्टिविटीज को, ठीक है? एक्टिविटीज पढ़ते हैं। ओके, 5 लोग हैं, एटलीस्ट एक एक एक्टिविटीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? एक्टिविटी में क्या है? These are the questions which are asked in NCERT. चलो, first, what's the name? हाँ, राधा, राधा बोलिए। Activity 1.1 aim to show the reaction between magnesium and oxygen present in the air. Characters and chemicals. Magnesium ribbon, watch glass, pair of tongs, burners, and paper. Procedure: clean magnesium ribbon about 2 cm long by rubbing it with sandpaper. Hold it with a pair of tongs. Burn it using the burner and collect the ashes so formed in a wedge. Glass as shown in the figure. Yes. While burning the magnesium ribbon, keep it as far as possible from your eyes. Observation: magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. This Yes. powder is Magnesium oxide. Then conclusion. Magnesium oxide is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. Equation: 2 Mg plus O3 equals to 2 Mg. yes. So हेमा पढ़िए। हेमा किधर है? आज हेमा नहीं है। अच्छा, इस क्लास में दूसरे क्लास में है। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ हाँ, ध्वनि, राइट, ध्वनि, सॉरी, आई थिंक सो दूसरे क्लास में, दूसरा ब्रांच में। हाँ बोलो। Activity 1. Aim to show change in state and color when a chemical reaction takes. Apparatus and chemicals, lead nitrate solution, calcium iodide solution, test tube and a molecular glass. पढ़िए। Procedure: take lead nitrate solution in a test tube, add potassium iodide solution to the Yes, yes. Oxidation: lead nitrate reacts with potassium iodide to give lead iodide and potassium nitrate. The color of the products is Different from the reaction. You get yellow PPT of lead iodide. Conclusion: AbNO3 twice, the whole twice plus 2Ki will give you precipitate of PbI2 plus 2KNO3. So this is what type of reaction? Double displacement. Double displacement. So read up in now. color is because lead iodide and potassium nitrate have been formed after the reaction. PbI2 is a It's yellow. a yellow PPT. KNO3 is a colorless solution. Barabar? So next one. Hussein, na? Smile. Shumail, sorry. SHAUMYL, right? SSU. Acha, you, yes, Shumail. Good, Shumail. Bolo. AY. AYL है क्या? Okay, Shumail. ठीक है, चलो, पढ़ो. Activity 1.3. Aim to show the interaction between granules and hydrochloric acid or sulfuric What's sulfuric acid? Action of This is what type of reaction? Placement, yes or no? Photo. apparatus and chemicals. Ring granules, conical glass, test tube, hydrochloric acid or sulfuric acid. Procedure: take a few zinc granules in a conical glass or a test tube and dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. Touch the conical glass or test tube. Observation: a gas is evolved and the conical glass becomes warm. Conclusions: from this we conclude that when a chemical reaction takes place, there is a change in state, color, and temperature. Yes. Zinc plus 2HCl giving you zinc chloride and hydrogen plus heat. Where zinc plus H2SO4. Photo. Plus H2SO4 What is that? zinc sulfate plus Plus hydrogen gas plus heat. चलिए क्या नाम आपका? हाँ, वंशिका, बोलिए. Activity 1.4 aim formation of spring made by the reaction of calcium oxide with water. क्या नाम आपका? हाँ, हाँ, आनंद, yes. एक वीक के बाद मिल रहे हैं ना, ब्रांड का ओवरलैपिंग हो रहा है. चलो ठीक है.
अभी एक नेक्स्ट वीक में सबका नाम एकदम ही माइंड चला जाएगा। चलो देन 1.4 एक्सपेरिमेंट फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइन पढ़िए वंशिका। अरे सॉरी हाँ वंशिका राइट बोलो। Formation of slate line by the reaction of कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। Fluids and chemicals, calcium oxide, vapor and वेरी गुड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर गिविंग यू स्लेट लाइन। वंशिका क्या लग रहा है आपको? कौन सा रिएक्शन ये लग रहा है? और एक रिएक्शन है याद रखना, वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। अभी तक चिल्ड्रन टॉपिक इज नॉट येट ओवर। इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन यस है ना राइट। चलो बोलो। procedure. Take a small amount of calcium oxide. Or quick like in a beaker. Slowly add water to this and then touch the beaker. Observation. The beaker becomes hot. Exothermic reaction. It reacts Vigorously. with water. Confusion. Slate line is formed by the reaction of a combination of calcium oxide with water. Ca वो सॉलिड S का मतलब है सॉलिड, L का मतलब है लिक्विड, Aq का मतलब है एक्वियस एंड हीट। यस और नो? yes. तो ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक प्लस कॉम्बिनेशन। चलो लास्ट अनन्या पढ़िए। एक मिनट लगेगा। Sure decomposition reaction. Apparatus and chemicals, there is sulfate. Crystals. And further. Very good. Here, take about 2 grams of ferrous sulfate crystal in a boiling tube. Note the color of वो the देखो बॉइलिंग ट्यूब में आपने देख और स्टूडेंट कर रहे हैं ना, हाँ देखते जाओ उसको। देन heat the boiling tube over the flame of burner or split lamp. Observe the color of the crystal. यस Observation: the green color of the ferrous sulfate crystals has changed and become brown. There is a characteristic order of burning sulfur. यस This is a decomposition reaction. Yes. By the reaction 2 FeSO for solid of heating will give you Fe2O3 which turns into brown color with sulfur dioxide and sulfur dioxide. The burning smell आपको मिलेगा। जैसे क्रैकर्स बर्न करते हैं तो आपको ऐसा स्मेल रहता है, वो क्रैकर्स में सल्फर है। ठीक है? So all of you read this 1.56 से sorry 1.6 से next time start करेंगे with the homework question will be ये वाला क्वेश्चन है। देखो इसका जितना भी रिएक्शन किए आपको पेज नंबर 4 and 5 and 6 ठीक है 4 5 and 6 सबको लिख के लाना है आपको तीन बार राइट नाउ 4 5 and 6 3 times each reaction and then I will then give you one short test on that those reactions. What will be the test? वो बुक में हम लोग बताएंगे और पहले का जो होमवर्क बाकी है सबका जिसका कंप्लीट इट कि आपको मालूम है उसका कॉन्फिडेंस बताया ना क्या हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट टाइम प्लीज कंप्लीट इट। ठीक है ना? ये reaction पूरा रिएक्शन लिखना। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। देखो उधर 4 5 and 6 पेज में। ठीक है? क्वेश्चन एंड आंसर नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम वी विल। ठीक है चलो।